So we'll wait for some time and we'll see if more people can join. This is a bit of a different setting for my live sessions. I'm not in the normal place where I do the live sessions for some reasons. So today we'll do it from this place. Anyone who has a question can send me a request or the question. We can do it all together. That is not an issue. Thank you, Patriotic Falcon, for your compliment. And let's start the live session. This will be a question answer. I have done it in a very short notice, so I'm very sorry about the short notice period of this session, but we'll start it. So first of all, the important question: am I audible to everyone? Can everyone hear me loud and clear? Is there an issue with the uh, live session or anything? So if there is, you can tell me. uh, Else we will start with the questions that we have received already. Okay, so Ram from South has a question that can you start speaking a bit more in English, because uh, a lot of people are from South India and they do not understand the entire Hindi thing. Sure, Ram, I can do that too. That is why I ask you, if you have a question and you want me to speak in English, you can just tell me. If someone wants to know the answer in Hindi, they can say कि हिंदी में बता दीजिए. I'll do it in Hindi too. Both the languages I'm okay with. Uh, और 36 राफेल लेने की डील हो सकती है क्या? बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन में 114 नहीं ले सकते. ओके, सो दिस गाय हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन इन हिंदी, सो मैं उसका जवाब हिंदी में दे दूंगा, फिर इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा. सो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनसे मेरा जवाब ये है कि एक प्रोविज़न होता है जिसे कहते हैं फॉलो ऑन ऑर्डर. उसका मतलब ये होता है कि आप उस ऑर्डर को उस एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है. आप उसी प्राइस में थोड़े और जेट्स या उतना ही और जेट्स और ख़रीद सकते हो. दैट इज़ अ प्रोविजनल थिंग. हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग वैल्यू होता है. हमें ये नहीं पता कि राफेल के कॉन्ट्रैक्ट में कितने का प्रोविज़न है, बट आई थिंक 36 और का है, एज आई रिमेंबर. सो हाँ, हम उसी ऑर्डर में सेम प्राइस पे या फिर सेम वैल्यू पे एक फॉलो ऑन ऑर्डर लगा सकते हैं. अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन, तो हम एक और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ 36 राफेल मंगाएं. 114 नहीं हो सकते इकोनॉमी में. इट इज़ मोर अबाउट इकोनॉमी. आप इकोनॉमी तक ही नहीं होती ये बातें. डिफेंस डील्स बहुत फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी तो जो भी है, चलो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोविड क्राइसिस अपना सीन है. लेकिन बात यह है कि मुझे अब लगता नहीं है कि 114 की डील किसी भी कंडीशन में होगी. बिकॉज अभी हमारे खुद के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है MMRCA 2.0 को. तो इतने साल बाद भी कोई ज़्यादा हेडवे नहीं हुआ है, ज़्यादा आगे हम नहीं बढ़े हैं डील में. तो मुझे लगता है कि 114 की डील नहीं होगी. तो आंसर फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स इज कि it is quite possible to do a follow-on deal and order 36 more of these. Even if such a provision is not made in a contract, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा प्रोविजन नहीं भी है, तो वी कैन डू अ फॉलो ऑन ऑर्डर 36 राफेल का. प्राइस नेगोशिएशंस विल टेक प्लेस एंड इफ देयर इज नो प्रोविजन and we can buy 36 more. I believe that the deal for 114 more jets is not feasible because we have our own projects. That is why it might not happen that we go ahead with the MMRCA 2.0, because Tejas Mk2, TDBF, or ORCA is not a project yet, but it is a possibility in future. So talk about statement issued by Global Times about the going to war is the only option. Okay, so Global Times is a Chinese mouthpiece. You know it, I know it. The Chinese government has a firm control on the media. The Chinese government decides what they speak. Chinese government decides what they show. So it is all controlled by Chinese government and the CCP, the Communist Party of China. So Global Time will say a lot of provocative things. They will post a lot of stories. They will try to demoralize you and all the things. If war is the only option, see, diplomatic talks, military talks, and military actions, all three go in hand. You cannot do one thing and you cannot do the other. ये सब चीज़ें होती हैं. डिप्लोमेसी भी होती है. वॉर टॉक्स के लिए आप आर्मी भी बात करती है, पॉलिटिशियंस भी बात करते हैं, और उसके बाद बहुत कुछ टॉक्स होती हैं बिहाइंड दरवाजे के पीछे भी.
सो अभी ये ग्लोबल टाइम का जो ये वार इज़ द ओनली ऑप्शन वाला सीन है, द थिंग दे से दैट वार इज़ द ओनली ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट. इट शोज हाउ they are rattled by the moments or the things the Indian army has done to the Chinese army. So I'll take some questions in the comment section. सर क्या अक्साई चिन्ह हम वापस लेने वाले हैं? स्वास्तिक, देयर इज नो प्लान ऑफ टेकिंग बैक अक्साई चिन्ह. Normally, until war happens, we have no such plans of taking back अक्साई चिन्ह. अक्साई चिन्ह लेने का कोई प्लान नहीं है. ऐसा कोई प्रोविजनली हमने कुछ सोचा नहीं है कि हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे या वो होगा. वॉर होगी तो जोग्राफीज चेंज होती है, तो उसमें मे बी हम कुछ पार्ट कैप्चर करें या मे बी हम कुछ पार्ट लूज़ करें. ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कल अक्साई चिन्ह पे कब्जा ही कर लेंगे. ऐसा कोई डायरेक्ट वो नहीं है क्लेम. Do you think metallurgy is a major problem for Indian defense to become self-reliant? Okay, so metallurgy can be in multiple things. You can say metallurgy in artillery guns. You can say metallurgy in engine blade, single crystal blade technologies, and all sorts of things, right? So India has developed single crystal blade technologies, SCB. We have first generation, second generation, and I think we have in lab made the third generation of SCB, which are used in uh, hot sections of the engine, jet engines. Metallurgy alone is not the problem. It is one of the major issues, but it is not the only thing that is hurting the Indian defense sector. First of all, the private companies are not allowed to participate in such big things. They are not supported for the research and development. They are not given the fund. They are not promoted. This is one issue. Secondly, the PSUs on such projects have been very reluctant about their mistakes and all the issues. I feel GTRE alone working on it is not a solution. They should work with the private players. Baba Kalyani, Bharat Forge has excellent metallurgy knowledge, and there are many things we are doing, but it takes time, it takes a lot of money. China has spent 20-30 billion dollars and still they do not have the jet engine technology, reliable jet engines. So it is not just about metallurgy, it is about a lot of things. Engine is not just about metallurgy, it is about a lot of components working together and working in sync. So that is a very difficult technology to get. Metallurgy surely needs improvement and investment, but it is not the sole thing. अक्साई चिन्ह वापस मिलने वाला है भाई, ऐसा कोई प्लान नहीं है. अक्साई चिन्ह मिल जाएगा. देयर इज़ नो गारंटी दैट यू विल विन द वॉर. देयर इज़ नो गारंटी यू विल लूज द वॉर. एंड इंडिया डज नॉट हैव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. अक्साई चिन्ह इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, that is true, but Chinese also claim it, and Chinese have built infra in that place for decades now, so it is not going to be that easy. JF-17 is interstellar space fighter aircraft. I have also heard about the mythical JF-17, which shoots down MiG-21, and it can shoot down Sukhoi, and it can shoot down F-22 Raptors and all the things. JF-17 is magic. NSG, I'll surely see your question too. Bro, can you explain about Saurav Jha's tweet about Blacktop? Okay, Saurav Jha has he does a lot of tweet, and he's defense guy, just like me, but he's much senior to me. He has good knowledge of things. So he talked about how Blacktop was captured by Chinese, I remember. So there have been movements on both sides. Indian army is trying to capture vital points. Chinese army is trying to capture vital points. So it is an ongoing thing. It is not constant. It is not just one-sided. It is a struggle to get to the locations and set up their own things there. Why everyone rejected Rafale but Indian government accepted that aircraft? Okay, so Shivang, I think your name is Shivangi Tiwari. I'm not sure if it is wrong, so I'll be sorry for that. Okay, so the question is why everyone rejected Rafale but the Indian government accepted it. So first of all, not everyone rejected Rafale. Many nations have bought it. France uses that in a large number. I think Oman, a few other countries, Egypt also bought few, and there are few countries who are negotiating for that. First of all, understand that Rafale is a very expensive aircraft. There are many countries which
make aircraft, but not all make such good aircrafts or something. Secondly, Rafale was not the original project. The plan was to have all the European countries make a consortium and they will manufacture one aircraft. That was Eurofighter Typhoon project. But in the middle, the French left the project, as I remember, and they started working on their own aircraft, which was Rafale, uh, or Rafale, as people say it. But the thing was that these aircrafts are expensive. First, not everyone can afford them, and second factor is that when multiple nations are involved in manufacturing the Typhoon, then why will they buy Rafale? They will simply stick with Eurofighter Typhoons. That is why Typhoons were much bought. Third factor about Rafale is not there's a myth that everyone has rejected it. See, there are many things which go hand in hand when we're talking about defense procurement. आपकी politics भी होगी, and there is geographical relations, all sorts of factors. So there is political pushing, weight throwing, forcing the other countries to buy their own systems, and all sorts of shady things happen behind the curtains. So that is why many nations backed out of affair. This is also one factor. So all these things continue, but I'll ensure you Rafale is an excellent aircraft. When we did the MMRC 1.0, that was in 2005, there were only two fighters which qualified for the IAF. One was Eurofighter Typhoon and second was Rafale. And L1 bidder, which is the lowest bidder, was Rafale or the Salt. So that is why we went for it and we did not select Eurofighter. In future, can Japan allow us to have a naval base on Japanese islands? What's your opinion? See, with Japan, we signed an agreement on logistics and all. We have a similar agreement with US, and we also signed a similar thing with Russia, as I remember. So the agreement allows sharing resources, movement to the military bases. There are many things inside the agreement. You have to take permissions. बहुत चीज़ें होती है. There are several factors involved, but basically this will allow you to share items, ammunition, fuel, etc., etc., etc. So this can be done. Will Japan allow us to have a naval base in Japanese islands? The problem I see with this theory is that Japan and India are very distant. First of all, we do not have that level of uh, global power projection. Our navy is not a blue water navy. The only blue water navy today is US. So India is not US. You cannot send your navy from here to South China Sea and then to Japan and then simply set up there. It is going to be a logistic nightmare, first of all. Second, it is going to be very expensive. In the long term, it can be a thing that you can think about having naval bases around the globe. But first, you need to focus on Indian Ocean region. See, China is uh, China is trying to access the IOR because IOR is a very critical region. Majority of the world trade happens from here. If China does some misadventure, India can simply block the Malacca Straits and the trading route of IORs, and China will not get the things it requires. China will not get the amount of fuel it needs. China will not get all the items and food items it imports or exports. So China will suffer economical disaster if India does any such things. This is why China is so interested in the IOR region. That is why it is having the strings of pearl theory, and it is also trying to make another route from Antarctica and all for the trading to safeguard its own interest. So we will have to focus on our own. First of all, our navy is not so well funded that you are thinking about going to the Japanese side of South China Sea. Focus on your home turf. You have to invest a lot of money in IOR. यहाँ पे पैसा खर्च करो, आप bases setup करो, defense infra को आप improve करो IOR का. These are more important things first of all. So this is my theory. We may finally allow the Quad forces like US and Japan access to a certain naval base, or we can make a naval base together. That is a long-term things, but these things are very geopolitical, so I'll not comment on that for now. Do you think India has to do reverse engineering than China, like China? I believe that we should, but India has not shown that kind of
nature to invest. We have shown like we are more of importers than trying to do R&D on such stuff. India can make a lot of things today too, like homegrown technology, but still we are importing them because we did not have long-term vision, we did not have long-term plans. Chinese had long-term planning. They knew that they cannot rely on Russia, they cannot rely on the US, and there were sanctions and all. They learned a lot of things and they started making their own products. First they were copies, then they started improving them. So I feel India should do the same. But is India willing to do the same? That is one of the questions that you have to ask. Uh, does India ask normal civilians to join the army in case of war? See, there is a provision for draft, but India has such the youth in India is dying to join the army in case of any requirement. So India has such a large population that people will rush to the battlegrounds with their own will. People will join the army on their own. So I don't think that you will need a force that you will have to be pulled out of your houses and thrown into a truck. This will not be required in India, hopefully. If we mount a 80 turret on BMP, can we fulfill our light tank needs? So Vinayak, there was a project in the 90s. So what OFB did was they started their own light tank type project. They mounted a 105 turret on a BMP. I think it was BMP one. I do not remember exactly which one it was. And army did not show any. Army did not do it any favors. Army said that they do not require a light tank back then. So we never went ahead with the project. And I think L&T and DRDO is working on a K9 based light tank. Although it will not be light. भाई जी, ताइवान अपने मिराज 2000 सेल करना चाह रहा है क्या? हमें उसे लेना चाहिए या नहीं? Okay, so NSG has asked me a question here. He has asked in Hindi, so I'll answer in Hindi. I'll just do it in English later. So NSG भाई, बात ये है कि जो ताइवान के मिराज 2000 है वो बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा उड़ा चुके हैं वो लोग। उनके फ़्लाइट आवर्स बहुत ज़्यादा है, उनकी जो फ्रेम है, एयर फ्रेम की लाइफ बहुत कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उन्होंने अपने मिराज को अपग्रेड नहीं किया। उन्होंने यूएस के फाइटर्स लिए, ये सब किया, तो उन्होंने अपने मिराजेस को कभी अपग्रेड नहीं किया या फिर अपडेट नहीं किया। इस वजह से वो जेट्स आप अगर ख़रीद भी लोगे तो आपको उसे आईएएफ के स्टैंडर्ड तक अपडेट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आईएएफ का जो मिराज का अपडेट है वो बहुत महंगा है, $40 million एज आई रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग विद आवर ओन जेट्स। $40 million से ज़्यादा का वो अपडेट है। तो क्या आपको लगता है कि उतने प्राइस में आप एक पुराना जेट खरीदेंगे जिसके फ्रेम लाइफ कम बची है, उसके बाद आप उसे अपग्रेड करेंगे तो इट विल बी वैल्यू फॉर मनी? उतने में तो आप एक नया जेट खरीद देंगे। सो दैट इज़ द आइडिया कि हमें ताइवान का मिराज लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मे बी फ्यूचर में अगर हमें कोई वो जैसे फ्रेम सस्ते में मिले, जैसे हमने जैगवार्स खरीदे थे बाकियों से, उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनसे स्पेयर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें सैल्वेज कर सकते हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट वी कैन नॉट बाय देम एंड देन अपग्रेड देम। उसका वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं है। सो द आंसर इन इंग्लिश इज बेसिकली दैट Taiwanese Mirage 2000 old jets, they do not have enough service life left in them. Secondly, they have not been upgraded from long time, and Indian upgrades are very expensive. The Indian Mirage requirement is very expensive, and it will not be value for money spending $40 million per jet to upgrade an old airframe. So it is not a good deal if we go with the 2000 upgrade or purchase from Taiwan. सर, क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है? सी, क्वाड इज़ समथिंग दैट पीपल हैव ऑलवेज क्लेम टू बी अ गेम चेंजर, बट आई डू नॉट बिलीव क्वाड इज़ such a game changer, because the thing is, it is okay for diplomacy, it is okay as a deterrent, but will Australia, will US, will Japan, will they support you in a war? Maybe, maybe not. It never expect anyone to fight your battles. कभी ये उम्मीद मत करो कि आपकी लड़ाई करने कोई और आने वाला है या आपकी कोई मदद करेगा, आपका कोई दोस्त आपकी लड़ाई में कूदेगा। जब भी कोई देश किसी की लड़ाई में जाता है, जैसे अमेरिका ने अटैक किया जब मिडिल ईस्ट में, सो बहुत सारे
दूसरे देशों ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया, जबकि वो एक साथ थे, पार्टी में अलायंसेस थी उनके, कॉपरेशंस थे, सब कुछ था। कोई भी अपने आदमियों को मरने के लिए नहीं भेजना पसंद करता, वो भी किसी और के लिए। सो नो वन इज़ विलिंग टू सेंड देयर ओन मैन टू डाई फॉर यू. When they do any such bold move, like if they send people to fight your battles and their people start dying, the coffins will return back to their own nation and the people will start questioning the governments. This is one issue with the democratic nations. People can question the government. Yes, Limo agreement was with the US. Sir, your bids on IA R5 for night vision BM equipment of BMP. Okay, I think you have also asked this question here, so I'll just take that. Okay, so night vision upgrade for BMP. So we are looking forward to upgrading some 700 to 1000 BMPs. I'm not sure the number, and we are trying to upgrade them with night vision generation 3 night vision things and optics. The idea is that BMP are not night fight capable. They cannot fight as effectively in night as they can during the day. They are, even if they have the night vision, they are very outdated and they are not the latest. So IA is trying to improve this, and IA is trying to upgrade their BMPs, and they want to upgrade it in 2 years. I think 2 years time frame they have given RFI from the signing of the contract. Within 2 years they will have to upgrade the BMPs, the company which wins. So this is the plan. I like the idea, but I also feel that we should not do half-hearted upgrades. हमें आधे आधे दिल से upgrade नहीं करने चाहिए. हमें पैसा लगाना है, हमें उसे 10-20 साल और यूज़ करना है, जिन्हें उन पे अच्छे से लगा देना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में 5 साल बाद आप फिर एक नई RFI ला के उस पर अलग से पैसा खर्च ना करें, जैसा हमने किया है, अपने एयरफोर्स में किया है. उन्होंने कई बार ऐसे ऐसे अपग्रेड्स किए हैं कि आधे मन से किए अपग्रेड्स कभी सक्सेसफुल नहीं हुए. आपने FF27 में देखा होगा, अभी का जो रेडियोस था, कम्युनिकेशन जैम हो गया था एंड ऑल. This is one issue that happened because back in the day when we could have done more deep upgrades, we just simply thought कि इतना सा करके छोड़ देते हैं to save cost, and in the long term they costed us. But bro, do you think that three armed forces are ready to handle the PLA if situation arises? They are. I cannot comment how, what, when, but they are. The armed forces are always ready to handle the situation in case the need be. So that is their work. क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है. भाई क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करने या ना करने के पीछे बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं, एंड आई डू नॉट, मैं बिलीव नहीं करता कि क्वाड इतना इम्पॉर्टेंट है या फिर उतना गेम चेंजर है जितना उसे हमने बना दिया है या फिर लोगों ने उसे बोला है. कोई गारंटी नहीं है कि ज़रूरत पड़ने में वो आपके लिए आएंगे. Is there any proposal about upgrading Sukhoi? See, Sukhoi upgrade or Super Sukhoi configuration has been talked about since 2010s. When I was very young, 10 years ago, there were still talks of Super Sukhoi. उससे पहले भी बातें होने लग गई थी कि सुखोई का अपग्रेड आएगा, मिड लाइफ अपग्रेड्स होंगे, ये आएगा वो आएगा, बट कोई सॉलिड रिक्वायरमेंट नहीं है. इंटरनेट में आप जाओगे, रेडार को ये ऐसा कर देंगे, इंजन्स को अपग्रेड कर देंगे, कम्युनिकेशंस को अपग्रेड कर देंगे, सब कुछ अपग्रेड कर देंगे. इंटरनेट वालों के लिए सब कुछ करना बहुत आसान है, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ अपग्रेड किया जा सकता है. रियलिटी में इकोनॉमी एक फैक्टर होती है और इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा फैक्टर होता है. आप हर चीज़ को अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको पैसा समझ के खर्च करना पड़ता है. आप जस्ट बिकॉज आपका मन है कुछ चीज़ें अपग्रेड करने का, डजेंट मीन दैट यू एंड अप डूइंग एवरीथिंग. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो Air Force is discussing about the requirements of Super Sukhoi. They are trying to figure out what they want, and after they will be done with them, they will put RFI. But ये है कि do not expect everything to be upgraded. Do not expect a new radar, a new engine, a new this, a new data link, a new communication. That is not possible. That is going to cost you a ton of money, and that will not be worth it.
F-18 or Rafale, go IM. So okay, Rohan, the answer is that I personally feel that Rafale M will be a better fighter because first of all I do not trust the US. Second of all, we are buying a Rafale for the Air Force, and if we buy it for the Navy, it will improve the cost, lower the cost because economics of scale. Secondly, you will have a part commonality and you will have a weapon commonality. आपको नेवी के लिए अलग नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको एयरफोर्स के लिए अलग नहीं खरीदना पड़ेगा. दैट विल रिड्यूस योर लॉजिस्टिक इश्यूज. So that is one more factor that's why I believe that Rafale should be the preference between these two. And so that is this. And okay. So that is the thing. Future of conflict in India-China standoff. We cannot comment on that, Kilo. Anything can happen. It is an ongoing situation. I cannot say who will win, who will do what. I do not trust the Chinese. Government does not trust the Chinese. We are doing all we can. We are talking with military. We are talking with diplomacy, and we are talking with the help of the allies. But if push comes to shove, then we will also hit back. Why don't GUI spend more to improve Indian Navy and like that of the Army and Air Force? So okay, first of all, Praga, the thing is that the Indian Navy has been highly neglected. That is my personal opinion, and I have had this opinion for too long. Indian Navy gets the least share of the budget, defense budget, and Indian Navy is expected to do a lot of things. But our doctrine has been that the fight will come from Himalayas, and we are more focused on the land borders, sadly. That is why we have neglected the Navy for too long, and this can be an issue in the future because till now we did not have any rival Navy, the Navy which can do any harm to India in the IOR region. But today, China is spending a lot of money. China is trying to come to the IOR region, so we will have to shift our focus towards the Navy too. आपके कमेंट्स ऑन चाइनीज़ इक्विपमेंट. ओके, सो भूषित, हिंदी में ही जवाब दे देता हूँ, आपने हिंदी में पूछा तो. ओके, मेरे कमेंट चाइनीज़ इक्विपमेंट में ये हैं कि चलो आप उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट नहीं कहोगे, लेकिन चाइनीज़ इक्विपमेंट इतने ख़राब भी नहीं है जितना लोग बोलते हैं. जैसे लोग कहते हैं कि चाइना का माल है सो इट विल नॉट वर्क. दैट इज़ नॉट ट्रू. चाइनीज़ हैव मेड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू वेपन्स एंड सिस्टम्स. उनके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बेटर हैं, उनके सेंसर्स बहुत अच्छे हैं. उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है रिसर्च डेवलपमेंट, चोरी करना, सब चीज़ों में. सो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं. मे बी वो वर्ल्ड क्लास ना हो, मे बी वो यूएस के लेवल के ना हो, मे बी वो रशिया जैसे अच्छे जेट्स ना बना देते हों, लेकिन वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं एंड वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ दे नीड. If India loses a fighter, like if India loses a Su-30 MKI during war, India will have to ask Russia to send a kit, then we will make it, or we will do the contract signing and also this is all going to be costly. Chinese will lose 10 aircraft, they will manufacture 10 more. मतलब टाइम उन्हें भी लगेगा, लेकिन उनका प्रोडक्शन रेट भी अच्छा है और उनके खुद के प्रोडक्ट है तो बना सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा. सो अ लॉन्ग फाइट विद चाइनीज़, अ बैटल ऑफ एट्रिशंस, मतलब जिसमें आप बैटल ऑफ लॉसेस करते हो या कि चाइनीज़ आर फेसिंग लॉसेस, यू आर फेसिंग लॉसेस. इन दैट सिनेरियो चाइनीज़ हैव अ एज ऑन इंडिया. दैट इज़ माई बिलीव. देयर सिस्टम्स डू नॉट वर्क एज दे से. आई बिलीव दैट कि मे बी 5 out of 10 does not work as good, but the last 5 work. So you cannot say that Chinese equipment are bad. Okay, so I think I have reached the end. Okay, so there are more questions now. Can India look forward to arming Taiwan and strangle China further, for instances with BrahMos cruise missile? See, you cannot sell BrahMos to any other nation without the permission of Russia, and Russia is a China ally. Secondly, you can arm Taiwan, but is Indian government willing to do so? We have seen Chinese are arming the Northeast rebels. Chinese are arming the Pakistani army. Chinese are giving weapons to all the nations who do not like India. And India for years has been talking about we will export this to Vietnam.
10 years later, we have still not exported the item to Vietnam. So, is Indian government willing to do so? Is the bigger question. I think that now, as China is claiming Jammu and Kashmir as something, and China is making statements on Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh, we should also make statements on Taiwan. We should also make statements on Tibet, and we should say that Tibet is a free nation, and Tibet should be given freedom because, let's be honest, Jawaharlal Nehru fucked up when it came to Tibet. The Tibetan people were our brothers. They shared a civilization with us. They were our allies for decades, centuries, and we simply neglected them and we did not help them. And now China is our enemy, and China shares a border with India. So this is all credit to Jawaharlal Nehru and his policy failures and policy paralysis. I feel that Modi government should now say that this is not one China. We do not support one China. We support Hong Kong. We support Taiwan. We support Tibet, and this will rattle China because China is not used to hearing such statements. एक और डाउट भाई जी, अगर Su-35 एंड F-15 स्ट्राइक साइलेंट ईगल को कंपेयर किया जाए तो आपका, आई थिंक स्ट्राइक ईगल था बट ओके, जाए तो प्लीज़ आप क्या डिसीजन होगा? ओके, F-15 लेजेंडरी वॉज अ लेजेंडरी एयरक्राफ्ट. अभी उसका एक नया अपग्रेड एंड ऑल की बात चल रही है, वो अलग जगह है अपनी जगह. बट अगर मैं हिस्टोरिक F-15 से Su-35 को कंपेयर करता हूँ तो आई विल बाय Su-35. F-15 बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, नो डाउट अबाउट इट, बट Su-35, I love Sukhoi. I love Su-35, so I'll be a bit biased towards it. सर आपकी गर्लफ्रेंड है? जी हाँ, आपकी भाभी जी है, एंड शी इज़ द को-एडमिन ऑफ दिस पेज. So yes, I do have my partner. AESA on MiG-29. Yes, Parth. Samir sir a few days ago said that the Indian Air Force was looking forward to arming the new 21 MiG-29s with the AESA radar, and it will have a Zook ME AESA, I think that was. I'm not sure how it is happening or what is happening, but if Samir sir says so, it is possible. APC versus IFV. A bit difficult question to answer, but India has a doctrine of IFV more. Can an Indian Navy capable of doing a naval blockade? That is our plan. We can do that. How to crack SSB? Okay, I think if you are talking about written paper, the thing is totally study and all, do that thing, anything. If you are talking about cracking SSB, then it is something that you have to be good with. You have to be good to yourself and you have to be honest. You have to have officer like qualities. You do not need to be perfect. There is no requirement of being perfect. You do not need to be an officer when you go into the SSB. That is not your requirement. They will make you the officer. You can have your flaws, you can have everything, but you need to be honest about it. You cannot lie. You cannot pretend to be someone else. You cannot try to be something you are not. These are the things they will catch and they will throw you out of the SSB gate. So to crack SSB, be honest. Try to be like an officer in your daily life. Improve. Do the reading. Wake up on time. Show the manners. Talk properly. Do not be bad towards poor people, or do not be bad towards the people who work under you, because finally you will work under someone and you do not want to be treated bad. So treat people as you wish to be treated. That is my own month, which I say, that I treat people as I wish them to treat me. If anyone is bad to me, then I'll be worse. If anyone is good to me, I'll be good. And if I'm meeting a person for the first time, I'll give them all the chance. They can have all kind of good impressions on me, and I'll be kind to them. This is more what I personally do. People have a different thinking. Today's generation has a mindset कि we will not care. पहले वो इज्जत करेगा तब हम इज्जत करेंगे. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. I'll hurt up people and I do not care because I'm brutally honest. That is not how it works. Life is about giving respect and taking respect. If you wish to be respected, then you need to start respecting others too.
And I'm not talking about licking someone's shoes. That is not respect, that is being a chamcha, and I do not like being a chamcha. It should be genuine. Be empathetic, first of all. Will diplomacy work? What do you think? No. Even the diplomats are not sure that diplomacy is going to work. So I cannot really sign with diplomats right now. They are not sure that China will pay heed to the diplomatic talks. So that is one more thing. What you say is actually true. Indian Navy got 13% of budget, not 15% of budget. 13% Indian Navy got, and I feel that they should get at least 20% of the budget that is required. I think it is possibility of is about 10%. I cannot put a gauge on which I can say that 10%, 12%. That is simply not happening. आई थिंक आई आंसर्ड द F-15 और Su-35 क्वेश्चन. क्या आपको लगता है कि SCO वाली FM मीटिंग में जो एग्रीमेंट हुआ वो चाइना? नहीं, आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट ट्रस्ट चाइना. आई ट्रस्ट Chinese as much as I trust my enemy. That is zero. Chinese have repeatedly broken agreements with people, so I do not trust China. मुझे चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. Free Tibet, we will. This time, why Vixot will capture Aksai Chin? You cannot plan a war. See, first of all, the planning goes into a dustbin as soon as lead starts flying. आप प्लानिंग कितनी भी कर लो, मैं सोचता हूँ कि चलो मैं कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करूँगा, मेरा प्लान है मैं कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करूँगा, मैं रिंग में जाऊँगा, मैं उसे घूसे मारूंगा, आई विल नॉक हिम आउट, आई विल बी द UFC चैम्पियन. दैट इज़ प्लान. As soon as I go into the ring and Conor McGregor punches me once, ये प्लान सब दिमाग के बाहर चले जाएगा उस पंच से. समझ रहे हो? You cannot plan fight. You cannot plan how your enemy is going to attack you. You cannot plan how you are going to counter him. These are the things that happen spontaneously. You have to improvise as the time goes, right? Submarine program upgrade, we have sent some kilos and all, but that is a different thing. That is going to be totally different. हाँ यार, कभी इंडिया जापान और मैं इंडिया जापान के बारे में बात नहीं करता, हमेशा चुप, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ओके. भाई जी, हमें एडिशनल Su-30 MKI ले लिया, उसकी जगह हम Su-35 ले सकते हैं. सी इट इज़ नॉट द सेम. Su-30 MKI एंड Su-35 आर नॉट द सेम फाइटर्स. Su-35 is totally Western. Su-30 MKI is Israeli, French, all sorts of mumble jumble put together as per Indian specifications. आप ये नहीं कह सकते कि आपने Su-30 MKI उड़ाया तो सिंपली आप Su-35 उड़ाने लग जाओगे and it will be equally good. You have to train on that. It is a logistic nightmare. Or why will you buy a different aircraft when you have 272 Su-30 MKIs and that they can be upgraded? सबमरीन प्रोग्राम अपग्रेड के लिए भाई वी हैव सेंट अकीलो क्लास सबमरीन्स के कुछ अपग्रेड्स होने थे, कुछ हमारे खुद के कर रहे थे, उनमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, ओवरहॉल करते हैं और अपने इंडियन सेंसर्स को फिटिंग करते हैं. उसका एक अलग मैंने पोस्ट किया था, आई थिंक वो आप पढ़ना पड़ेगा, इट इज़ अ बिट डिटेल. इस बार इंडिया का पेपर बहुत हार्ड था. इस बार इंडिया ने 700% डिफेंस एक्सपोर्ट किया. इस बार नहीं, वी हैव इम्प्रूव द डिफेंस एक्सपोर्ट्स विद टाइम. Conor retired. Conor is not going to retire. I will be honest with you. Conor McGregor knows how to make money. He simply will say that I am retiring. After 1 year or 2 years, he will find some big player, make some tall claims. Then you will see him fighting for $50 million or $80 million, and you will find him in the octagon. So Conor McGregor is not retired. And maybe if he does not come for UFC, he'll go for boxing. He'll go against anyone alive. He can do anything. There is substantial increase in misinformation campaign triggering Indian citizens by Chinese state media and ISPI. What are the counters? See, Indian government and Indian people are not very smart when it comes to PR and when it comes to cyber warfare. The people who follow me from 2017 know that I was part of a lot of, we did some things to counter the propaganda at that time, and 2018 maybe I worked on it, and it is a time taking task. I cannot do that continuously, it tires you off. So you need to have, Indian government needs to set up a cyber agency which does the counter propaganda and all. बहुत बाकी people will believe what they want to believe. Honestly, if someone hates Modi,
then they will also go to the China with the Pakistani story. They will happily follow the Pakistani story. It is the mentality of people. Actually, marking of LAC will resolve some issues since there is no marking exact LC. There is there is exact marking of LOC. See, bhai, we have been trying to sort out demarcation. We have been trying to find the actual LAC. हम मार्किंग के लिए सालों से बात कर रहे हैं कि चाइना और इंडिया डिस्कस करेंगे एंड वी विल सेट अप अ बॉर्डर. ऐसा होता नहीं है. इफ़ यू से दैट द LAC इज एट F8 एंड चाइनीज से द LAC इज F4, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि चलो दोनों मिलके F6 पे बना लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. बोथ गवर्नमेंट्स आर अंडर प्रेशर. डिमार्केशन इतना आसान प्रोसेस होता कि हम उस पर एक आर्टिकल लिख दे तो इट वुड हैव बीन डन ईयर्स अगो. By energy you will have to train the entire pilot ground crew and all for the Su-30 Su-35. so फ़ायदा क्या है, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ रही है ना. How good Su-30 MKI is? I find Su-30 MKI as the best fighter in South Asia. Chinese have few Su-35 and India has few Rafale, but I do not consider them enough. I feel that Su-30 MKI is actually the best fighter today South Asia में. Do we have to upgrade the Su-30 MKI? Yes, we have to. Like LCA Tejas weapon से कमज़ोर है is a different statement. They are not same, but a weapon is now in the third, fourth generation of block. मतलब it is 4-5 weapons have been made till date. LCA is the initial try. The MK1A is coming. It can easily take on the weapon C or weapon B. That is time consuming. आप दो एयरक्राफ्ट को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे. Hello, Bhai. How much time do you think will take for the economy to be normal? See, this is the new normal. You cannot expect the economy to boom at 10% now. For a long time period, you cannot have such expectations. I'll be honest, when it comes to economic front, maybe when we'll have a vaccine, everything will get fine at a better rate. But अभी जो चीज़ है ना, कोरोना is not something that we know कि कब ख़त्म हो जाएगा. हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कोरोना ख़त्म होने की, या फिर हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि ये चीज़ कब ख़त्म होने वाली है. जब हमारे पास टाइमलाइन होगी हम ये चीज़ों को फैक्चुअली डिस्कस कर सकते हैं कि अब दवाई आ गई है, 3 महीने बाद ये होगा. सो ये एक फैक्टर है. सेकेंड फैक्टर, आई बी ऑनेस्ट विद यू, विल बी द गवर्नमेंट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट बिजनेसेस को कितना सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को कितना सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा मैनेज डेवलपमेंट को कितना प्रमोट करेगी. बिकॉज these create jobs and jobs are requirement for any economy. गवर्नमेंट लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएगी, गवर्नमेंट हाउ विल गवर्नमेंट प्रमोट स्पेंडिंग, कैसे लोगों की जेब से पैसा निकाल के लोग खर्च करें, गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी. ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है. और इसके तरीके अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हों या आपने इकोनॉमिक के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत किया है, तो आपको अगर तरीके बताऊंगा तो यू विल से कि ये तो बेवकूफ़ी है. वाई विल यू डू दैट. आप इंटरेस्ट रेट कम क्यों करोगे सेविंग्स में, आप FDs के इंटरेस्ट रेट कम क्यों करोगे व्हेन यू वांट दिस दैट. सो ये चीज़ें आप जब सोचते हो तो काफ़ी अलग होती हैं, प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट होती हैं. Sir, is privatization AMCA project a good call from government? There is no privatization of AMCA. There is going to be a joint production thing. ऐसा नहीं है कि AMCA is privatized. हाल एक कंपनी के साथ टाई अप करेगा या मे बी एक कंसोर्टियम सेटअप करेगा जिसमें वो दोनों कंपनियां मिल के बनाएंगी, प्रोडक्शन करेगी. और सेकेंडली, इफ़ यू आर वर्ल्ड अबाउट हैकिंग और स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, आपके OFB कुछ खास अच्छा काम कर नहीं रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन बचाने के लिए. सेकेंडली, नॉट एवरी टेक्नोलॉजी विल बी गिवन टू द प्राइवेट कंपनी. टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र बहुत अच्छे एग्रीमेंट के साथ होता है, बहुत लॉ पेस होता है उसमें. वट इज़ दिस जूनागढ़ इशू? भाई आई एम नॉट गेटिंग. ओके, जूनागढ़ की एक हिस्ट्री आपको डिवीजन ऑफ इंडिया का आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. कैसे पाकिस्तान ने कौन कौन सी एरियाज़ और क्लेम की थी, जम्मू एंड कश्मीर के सिवा जूनागढ़ भी क्लेम किया था, बहुत कुछ था. आपको इशू पढ़ने पड़ेंगे. सो यू विल हैव टू study that. Okay, thank you Yogesh bhai. How is the combination of Su-30 MKI and Rafale? See, there will be tactic development. I cannot speak on this front at the moment, but Rafale is a very good addition. बस बात यह है कि the Rafale we have added is not sufficient. आपने बस
अभी आपके पास 5 जेट्स आए हैं और आप ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हो कि आपके पास 500 आ चुके हैं, नहीं आए हैं उतने फाइटर्स। इवन व्हेन यू गेट ऑल 36, आई डू नॉट सी दैट 36 जेट से कुछ खास नहीं होता है ऑनेस्टली। आपको और नंबर्स चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग। S400 कब तक आ सकता है, आपको कोई आइडिया लगता है? S400 की डिलीवरी इज़ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। नाउ आई टेक सम क्वेश्चंस देयर। और विंकेश का क्वेश्चन था कि भाई कब स्टार्ट हुआ यार, अभी अभी स्टार्ट किया था विंकेश, 40 मिनट हो चुके हैं स्टार्ट किए हुए। How can we save Siliguri corridor from any aggression? Okay, so the answer is that anyone who is going to try to attack that corridor or in the chicken neck and all such areas is going to be a stupid person. Those corridors, those areas are very heavily defended. That is not the best place to attack in case they want to. And if they successfully cut out the Siliguri corridor and if they cut out the chicken neck and all the things, then we will simply send our army through Bangladesh. That is not going to be a trouble. Hypersonic and supersonic is only difference in speed. Yes, hypersonic means something which is flying faster than Mach 5 or 5 Mach से ज़्यादा की स्पीड होती है. 1 Mach is nearly 320 something meter per second. That is your the speed. So 5 Mach आप समझ लीजिए कि 1.6 किलोमीटर से थोड़ा तेज़ उड़ रही है पर सेकेंड वो चीज़. That is 5 Mach. ब्रह्मोस की स्पीड एट द मोमेंट इज़ 1 किलोमीटर पर सेकेंड. जो हमने अभी HSTDV टेस्ट किया उसकी स्पीड जो अचीव हुई है वो है 2 किलोमीटर्स पर सेकेंड. ये फैक्टर है, मतलब ब्रह्मोस से डबल एटलीस्ट. अब आई विल बी शिफ्टिंग टू द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव सेंड मी बिकॉज टाइम ख़त्म होने वाला है. एंड वी विल डू लाइव सेशंस मोर. ऐसा कुछ नहीं है कि आई विल नॉट डू लाइव सेशंस. वी विल डू मोर लाइव सेशंस. You can always ask me questions on live sessions, but the thing is, I'll upload this live session on my YouTube channel. Kindly go to the YouTube channel, support the YouTube channel because I need some support on the YouTube front. I'm trying to upload all the things on YouTube as well. So YouTube थोड़ा important है, support कीजिए, उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा. And इंस्टाग्राम में आप सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लो, पोस्ट ऑन कर लो, लाइव के नोटिफिकेशन ऑन कर लो. उससे क्या होगा कि व्हेन आई पोस्ट यू विल नो, व्हेन आई विल बी लाइव यू विल नो एंड इट विल हेल्प बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ नॉट शोइंग माई पोस्ट टू एवरीवन. one day I have a reach of 10,000 people and other day Instagram is not showing the post to like 800 people. So that is an issue for me too. Should India and other countries create internal disbalance and is it easy? Creating internal disbalance in a nation depends on many factors. Are you doing economical disbalance? Are you doing military actions? Are you supporting separatist movement? That depends on what strategies and you have and what resources you are putting in. Do you think China will abide by the consensus? Do not expect China to follow any law or rules. China is not a player which follows rules. Do we have enough to handle PLA if situation arises where war is only option? Yes, we will do our best. China does not want to fight a defensive battle against India. Matlab, they do not want to be the aggressor against India because India has a capability to defend. A defender has certain advantages over attacker. So India will exploit all the information, all the knowledge they have about the positions, and they will attack Chinese attackers. Do you think India is going to indigenous in Navy? Can we see an issue? With India going indigenous in Navy? Can we see China? See, selling, first of all, manufacturing capabilities, you do not have that amount of manufacturing capabilities that you are able to fulfill your own demands at time. Do we make support ships? Do we make patrol vessels? Do we make small ships and export them? We do. But can we produce big destroyers for other nation? Can we produce big frigates for the other nation? Can we produce such critical equipment? I do not feel so because you do not have the manufacturing speed or capability. Secondly, your politicians are not able to support such exports. They do not do the political arm twisting of other nations. That is one more issue. Third factor is you still are dependent on foreign engines and radars and all the subsystems.
we do good when it comes to radars, but Indian Navy का main radar is MF Star that we use, and it is Israeli. With such sensors, critical sensors being imported, you cannot expect to sell big ships to other nations. Talking about Super Sukhoi upgrade by HAL radar, I think that abhi we do not know what Super Sukhoi upgrade will bring. Indian upgrade is highly doubtful because कुछ packs हैं. Secondly, it will be very expensive. Radar and avionics is one thing that we can upgrade, but engine is very doubtful. What is practical possibility of an armed conflict? See, there was always a practical possibility of an armed conflict. You must have studied that the war starts with a very stupid reason. Most of the fighting happens because someone does something stupid, and that something stupid snowballs into something stupid, and that snowballing effect causes a big war. World War Two, one being one example. So that is one example you can take. So I'll say that there is always a possibility. Uh, See, lately J20's Chandu says that they interrupted Rafale jets in India. Does this seem to? I think they're bullshitting when it comes to this one. They are bullshitting a lot. Should we look for more Rafale? Yes, I've explained this too. Can you please tell us about LUH? Okay, so LUH is light utility helicopter that was developed for the replacement of Cheta and Chetak. Cheta and Chetak are the two light helicopters we use, and LUH is used to replace that or developed to replace that. The project is it is basically a 3.5 ton chopper. It will have 6 passenger capability and 300 kg load capabilities at higher altitudes. The difference between LUH and ALH or Dhruv is that LUH is a single engine helicopter because it is for light utility, and single engine reduces the maintenance and reduces the cost. That is the difference. आपकी operational cost भी कम होती है, आपकी procurement cost भी कम होती है. AES on MiG-29 I have discussed, and Taiwan वाला I have discussed. एक और डाउट है भाई Su-30, ओके ये भी मैंने I have discussed. भाई जी मुझे लगता है हमने एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह मालाकास्ट I have discussed this like 100 times, and I always say that it is not smart to spend 15-20 billion dollars on aircraft carrier when you do not have other basic things first. विंकेश भाई स्टार्ट हुए लगभग 50 मिनट्स हो चुके थे इसे. भाई what is actually Project 17? It is a frigate project as I remember. Project 17 is about a frigate if I'm correct. So that is one thing. I'll do a send a dedicated post about that bhai on this thing. Okay, so last 5 minutes left for the live. Uh, After this question answer session is done, I'll discuss something important. So anyone who is able to help in one way or another, they should help a bit. It is going to be something important. So wait to listen that. भाई कुछ J10 के बारे में बताइए जो पाकिस्तान लेना चाहता है चाइना से. ओके, सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम चाइना हैज़ ऑफर्ड J10 टू पाकिस्तान. इनिशियली भी उन्होंने J10 ऑफर किया था, बट पाकिस्तान को उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स मिले थे. दैट इज़ वन स्टोरी. एंड सेकेंड स्टोरी इज़ दैट पाकिस्तान थॉट कि आप अगर JF-17 को नहीं लोगे और फिर J10 लेने लग जाओगे तो दैट विल सेंड अ बैड मैसेज टूवर्ड्स पाकिस्तानी पीपल, बिकॉज इवन व्हेन JF-17 इज़ नॉट पाकिस्तानी they take a lot of pride in that because उनके पास उसके IPR है and they make people believe that कि इसे पाकिस्तान ने बनाया है. ऐसा नहीं है, अब सब जानते हैं लेकिन फिर भी कहना पड़ता है. सो दैट इज़ वन फैक्टर. अभी रफाल की प्रोक्योरमेंट के बाद द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग J10s एडवांस वर्जन J10B J10Cs बात जो हुई है.
आई एम नॉट श्योर हाउ feasible it is, बिकॉज पहले जब J10 चाइना पाकिस्तान को सेल करना चाह रहा था तो दोज आर वेरी चीप इवन कंपेयर टू द JF-17s उस टाइम पे. टुडे दे आर मच मोर एक्सपेंसिव बिकॉज उनमें ज़्यादा एडवांस ये सब एडा हुआ सिस्टम्स है एंड इंटीग्रेशन है. यू मस्ट नो कि चाइना खुद J10s यूज़ करता है, चाइना JF-17 यूज़ नहीं करता है. चाइना खुद JF-17 यूज़ नहीं करता और पाकिस्तान यूज़ करता है उन्हें. चाइना अपना J10s यूज़ करता है, तो पाकिस्तान टुडे सी इट एज अ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी. बट बात यह है कि अभी पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 बना रहा है, मतलब चाइना बना रहा है, पाकिस्तान खरीदने की प्लान कर रहा है. एंड इफ़ दे सडनली स्टार्ट बाइंग J10Cs और J10 जो भी खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो देयर विल बी एन आइडिया कि J10 क्यों खरीद रहा है पाकिस्तान. क्या उन्हें भरोसा नहीं है अपने प्रोडक्ट पे? क्या वो उसी कैटेगरी का फाइटर क्यों खरीदता है जब वो कहते हैं कि JF-17 तो सबसे अच्छा जेट है, उससे अच्छा जेट तो दुनिया में नहीं है. तो ये सब बातें करने के बाद आप क्यों खरीदने वाले हो J10s को? J10 प्रोजेक्ट का इनिशियली स्टार्टिंग हुआ था इसराइल में. इट वाज लावी प्रोजेक्ट, मतलब इसराइल का लावी जैसे दिखता है. बहुत कुछ सीक्रेटली हुआ, चाइना नहीं मानता कि वो लावी है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि J10 इज़ लावी, इसराइली लावी. इसराइल ने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लावी करके, दैट वाज फंडेड बाय अमेरिका. इसराइल ने उसे बना भी दिया था, टेस्ट फ्लाइट सब कुछ हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिका के जो प्रेशर था उसके अंडर उन्होंने F-16 और F-15 और ये सब खरीदे और J10 को कैंसिल कर दिया. कुछ साल बाद अपने आप चाइना ने एक डिज़ाइन बनाया जो कि पूरा लावी का कॉपी था. एंड इसराइल ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ, चाइना ने कहा कि हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, ये तो हमारा खुद का जेट है. लेकिन असलियत ये है कि इसराइल ने सीक्रेटली चाइना को J10s का प्लान बेच दिया. दैट इज़ समथिंग दैट केम आउट ऑफ इट. एंड चाइना ने इसी वजह से अपना फर्स्ट फाइटर J10 डेवलप किया जो कि उसे इंडिजिनस कहता है. एंड we should give them credit where it's due. So J10 is Lavi, but J10 is China's first fighter. J10 Su-27 का कॉपी नहीं है, that is J11, and J15 is copy of Su-33. So that is another thing. So ये है J10 की कहानी और मैंने आपको समझा दी है. अब लास्ट 2 मिनट बचे, सो आई गो थ्रू वन थिंग. 2 क्वेश्चन और आए हैं भाई. एनर्जी, थैंक यू, you're वेलकम भाई. यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस हियर. Do you think India can defend nuclear bomb if China decided? If China decides to put nuclear bombs, then there will be no India and no China. Okay. So important topic ये था कि one of our friend is suffering from एन इकोनॉमिकल हेल्थ क्राइसिस, बिकॉज इकोनॉमिकल भी है और हेल्थ भी. सिचुएशन ये है कि उनके फादर को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. वो बेंगलोर में है. उनके फादर को बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले किसी इंसान से लिवर का डोनेशन चाहिए पड़ेगा. मैं उनका, देखो सब लिवर नहीं दे सकते, आई अंडरस्टैंड. मैं अगर दे सकता तो मैं भी दे देता, लेकिन मैं ए बी पॉजिटिव है, मैं नहीं दे सकता. लिवर ट्रांसप्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं. आपको शुगर, डायबिटीज़ या कुछ नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. सेकंड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, कि लिवर ट्रांसप्लांट करने वाला जो बंदा डोनर होता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है. आपका अगर लिवर का 30% कोई ट्रांसप्लांट कर ले तो आपका लिवर वापस 100% में ग्रो बैक कर जाता है, और उसका जो 30% उसको दिया है वो भी 30 से 100 बन जाता है. तो दोनों बंदे में 2 नए लिवर बन जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपका लिवर आधा रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता. 99% आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता. बाकी डॉक्टर से वो बात करवा देंगे इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड. सो दैट इज़ अ बेंगलोर केस. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो दे आर ऑल्सो फेसिंग एन इकोनॉमिकल क्रंच, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं फादर की हेल्थ पे. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. मैं एक लिंक डाल दूँगा कैटो का, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो. बीच में हमने प्रसन्ना की हेल्प की थी पैसे के साथ, एंड वी मेड सम 1 लाख रुपीज़ से ऊपर का डोनेशन फॉर हर. It will be a big help if you help her. If not by liver, you can help by economically also. So I'll be very thankful, and I'll upload this live session on my YouTube channel. Kindly follow the link and support us on the YouTube. Jai Hind, thank you, and also share our page because Instagram is not helping us at all with this. So with thank you and Jai Hind everyone.